सो हे एवरीवन, दिस इज़ प्रिया इन वॉचिंग प्रिया प्रीति आर्ट्स। और मैं आज आपको ये स्केच बना के शेयर करूँगी, एक्ट्रेस विद अ हैट। या सो ये दीप्ति है और आराधना शर्मा। या सो एज अ दीप्ति ये काम कर रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी। सो काफ़ी मतलब इनका एक्टिंग बहुत ही मुझे अच्छा लगा। या सो आई थॉट टू मेक अ स्केच ऑफ हर। सो या फाइनली ये कंप्लीट हो गई है और इसे बनाने में मुझे 2 आवर्स लगी। और मैं जो भी मटेरियल्स यूज़ की हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो दे ही दूँगी, प्लस मैं वीडियो में भी कहीं ना कहीं दे दूँगी। सो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जाऊँगी कि मैंने कहाँ पे कौन सी टूल यूज़ की और क्यों यूज़ की। या सो लेट्स सी। So first I'm using here charcoal pencil for shading the hat with normal pressure and मैं यहाँ पर कहीं कहीं डार्क करूँगी, कहीं कहीं लाइट करूँगी और ताकि थोड़े से डिफरेंस नज़र आए और ये रियलिस्टिक हैट लगे। एंड मैं हमेशा जो अपनी चारकोल को ब्रश से ही ब्लेंड करती हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चारकोल पाउडर को ऐड करके थोड़ा और शेडिंग की हूँ और मैकेनिकल इरेजर से हाईलाइट की हूँ। तो मैं हमेशा मैकेनिकल इरेजर से ही हाईलाइट करती हूँ और फिर मुझे जहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर मैं पेंसिल चला ली और थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे। और फिर हम आगे की तरफ शेडोज़ की तरफ मूव करते हैं। तो जो हेयर की शेडो पड़ रही है फेस पे, वहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जितनी भी डार्क एरिया है सबसे पहले हम उस पर डार्क कर ले रहे हैं चारकोल पेंसिल से और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो अब आगे ऐसे ही करते जाना है जैसे मैंने अभी तक बताया। सो लेट्स डू इट। To turn it on. या सो जहाँ जहाँ पे डार्क एरिया थी वहाँ पर मैंने डार्कनेस कर लिया है चारकोल पेंसिल से। अब हम हेयर्स की तरफ कर रहे हैं। तो हेयर में मैं ब्रूस्ट्रो की 5B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इससे बाद में हम अच्छे से ब्लेंड करके और फिर थोड़ी सी हाईलाइट ऐड कर लेंगे। सो अभी हेयर्स को ड्रॉ करके अभी मैं ब्लेंडिंग कर ली हूँ। अब हम आगे फेस की शेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो मैं फेस के शेडिंग के लिए आउटलाइन कैश पे पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि फेस थोड़ी स्मूथनेस आए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और मैं टिश्यूज़ का भी हेल्प ले रही हूँ थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। हल्का प्रेशर यूज़ करना है जब आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हो। और मैं भी डायरेक्टली रिंकल वगैरह सब कुछ अभी एक बार में ही ड्रॉ कर लूँगी एंड अच्छे से शेड करते हुए और ब्रश से ही ब्लेंड करेंगे। We about to turn it on.
Thank you so much for watching.